मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है PFI का, चाहे वो हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन। During an interfaith harmony conference attended by NSA Ajit Doval, the All India Council of Sufi leaders, beg your pardon, signed resolution seeking ban on PFI. इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है। As a part of the government's outreach to maintain interfaith harmony, National Security Advisor Ajit Doval in the conference said the country was progressing but was being hampered by some forces spreading negativity. India opens its medal count with a super silver in 55 kg weightlifting to Sanket Sargar from Sangli. And Gurujara Pujari wins a bronze in 61 kg weightlifting at the Commonwealth Games 2022, viewers. And after the headlines, let's begin with the burning question. Viewers, today the National Security Advisor, as is told in my headlines, Ajit Doval clearly, categorically made it clear that this hate speech formula, which is deliberately being used by certain, is going to adversely impact us all as one nation. Doval said it clearly, that don't be in this dilemma, that just because someone else is doing it, it will not impact us. It will hit us as a nation. And this cannot be allowed under any circumstance. He said clearly as he could have, as any NSA could have, that if someone wants to hide behind the religion after he or she makes such statements, the society, that is you and me, viewers, we as a society should reject it clearly, outrightly. And viewers, all of this was being said in presence of religious gurus, seers and everyone. And all of them vehemently supported what NSA said, because the Sar Tan Se Juda comment is not an Indian philosophy, is not an Indian thought process. It was being clearly said and was clearly said in presence of the National Security Advisor by Sayyid Nasruddin Chishti, very clearly that listen, this Sar Tan Se Juda cannot be allowed, cannot and shall not be allowed. Do you understand what the NSA has said? The opposition is jumping the gun by saying, listen, now the NSA is coming out and saying that all is not well. So it raises the question on the government. No, yes, the government is responsible. The responsibility of the government increases by many folds, but responsibility of our society also increases. And the opposition, which only knows to oppose, also needs to understand that all of this, and as in the words of the NSA, we are all sailing in the same ship. We sink together, we sail together. And we cannot sink. We will not sink, we shall not sink. We will sail through, and sail through like how? But for that, we have to take a very, very strong stance against this particular group, which feels that by this hate speech propagation, they'll be able to make their way out. This special report, and then we debate. NSA Ajit Doval chaired an inter-religious meeting in Delhi. शहजादा नशीन लोग, धर्म गुरु लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के, और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं इस इजलास में, उन सबको मैं अपना सलाम कहता हूँ, मेरा अभिवादन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। At the conference, NSA Doval called for a concerted effort against radical elements and spoke of a door-to-door campaign to remove misunderstandings among India's minorities. हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं, और जो नहीं भी हैं
उन तक भी हमको पहुंचना है कि जहां पर लोगों के अंदर में ये एक जज्बा पैदा किया जाए, वो इमोशन पैदा किया जाए कि हम किसी को भी अपने देश की अखंडता, अपने देश की यूनिटी, अपने देश की एकजहती, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। Notably, All India Sufi Sajjada Nashin Parishad Chief Hazrat Sayyid Nasiruddin Chishti shared his insights on how to curb growing fundamentalism. चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मदद से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में अभी मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है PFI का, चाहे वो हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। और हम धर्मगुरु एक बीड़ा उठाएं, एक अहद करें कि हम इस मुल्क को ना तो बंटने देंगे और ना ही रेडिकल फोर्सेस के आगे झुकने देंगे। इसी मकसद को लेकर हमने आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया है। Speaking to Republic TV, Hazrat Chishti said this. PFI का नाम चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पिछले 2 महीने से हम सुन रहे हैं, हर इंसिडेंट में PFI का नाम आ रहा है। PFI हो या उससे संबंधित और भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो रेडिकलिज्म की तरफ लोगों को ले जाते हैं, अगर उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हैं तो उनको बैन किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मुल्क के आइन के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और क्योंकि वो बदनामी का बायस हो रहे हैं मुल्क के लिए भी और मजहब के लिए भी। नसरुद्दीन चिश्ती के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया था, ये अलग अलग शहरों में भी करेंगे, और इससे कितना फर्क पड़ता है हिंदुस्तान के जिस तरीके का माहौल बन रहा है उस माहौल पर, ये देखने वाली बात होगी। This call to ban the PFI comes at a time when the wife of the key accused in the Karnataka hate killing case made this sensational claim. 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಗಾರ್ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ? PFI ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. SDP ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. With prominent Sufi leaders like Nasiruddin Chishti calling for anti-radical campaigns, will organizations like the PFI finally be banned? Isn't it time for a crackdown on radicalism? Let's debate. Well, yes, let's debate. And I have with me Sayyid Nasruddin Chishti, chairman of the All India Sufi Sajjada Nashin Council. He's live from Delhi with me, and I have Sadguru Shri Riteshwar Ji Maharaj. Can I have both of these on air right now, please? Sadguru, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। सदगुरु जी, जब हम शाम को आज बात कर रहे थे तो मैं इन्हीं माननीय सम्माननीय सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जी के बारे में बता रहा था आपको हिंदी में कि ही वॉज प्रेजेंट राइट नेक्स्ट टू द NSA with Shri Ajit Doval. So I'll go to Sayyid Nasruddin Chishti first, viewers. चिश्ती साहब, अगर आप बताएं कि आखिरकार एग्जैक्टली डोवाल साहब ने जब ये बोला कि हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और धर्म या मजहब के पीछे कोई भी छुप के अगर ये हेट स्पीच या इस तरह की चीजें करे तो हमें एक समाज की तरह एक साथ आके उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, चिश्ती जी। तो क्या कोई इसका विरोध कर सकता है, चिश्ती जी, या इसमें कुछ गलत है, चिश्ती जी? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। आज हमारी ऑल इंडिया सूफी सज्जन काउंसिल की जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी उसमें जनाब अजीत डोवाल साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो पर्दे के पीछे से मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, मुल्क की यकजहती ख़राब करना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम सबको मिल के खड़ा होना होगा। ये मुल्क हम सब का है, तमाम धर्मगुरुओं का रोल बहुत अहम हो जाता है और इस पर सब ने यूनानिमसली हाँ करी है और कमिटमेंट दिया है कि हम लोग इस मुल्क के एकता और अखंडता के लिए सब मिल के साथ काम करेंगे और जितनी रेडिकल फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ हम अब बड़े पैमाने पे एक अभियान चलाएंगे, एंटी रेडिकल फ्रंट बना करके, कि ऐसे लोगों को, इन रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए। इसके लिए हम दिल्ली से शुरुआत हम लोगों ने करी है और इंशाअल्लाह ताला हम इस शुरुआत को हर शहर में, हर स्टेट में लेके जाएंगे। एक बड़ा कैंपेन चलाएंगे इनके अगेंस्ट में कि इन लोगों को एक तो साइडलाइन किया जाए, समाज से दूर रखा जाए और अपने बच्चों को जो वालिदैन हैं वो ध्यान रखें कि वो ऐसी किसी संस्था से ना जुड़े, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़े कि जिससे उनका भविष्य अंधकार में चला जाए। नहीं, लेकिन चिश्ती जी,
हमें एक समाज की तरह, व्यूअर्स, आई होप यू आर लिसनिंग वेरी वेरी क्लियरली व्हाट मिस्टर चिश्ती एंड देन सदगुरु जी विल से। बट चिश्ती जी, एज ए सोसाइटी, समाज के तौर पे हमको भी तो एक साथ आना पड़ेगा, और खासकर ऐसे लोग जो धर्म या मजहब के पीछे छुपना चाहते हैं। ये जो हेट स्पीच बनना एक फॉर्मूला हो गया है, ये सर तन से जुदा, ये तो भारत की शब्दावली ही नहीं है, ये तो भारत के संस्कारों में ही नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की वैल्यूज में ही नहीं है। चिश्ती जी, कोई धर्म, कोई मजहब क्या इसको सही ठहरा सकता है? नहीं। चिश्ती जी जी, इस पे आज हम लोगों ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें सबसे बड़ा मेन एजेंडा यही था, सरतन से जुदा जो स्लोगन पिछले 2-3 महीनों से सुनने में आ रहा है, इसके लिए सबने बहुत स्पष्ट कहा है कि इसको कंडेम किया है और बहुत स्पष्ट हम लोगों ने डिक्लेयर करा है कि ये एंटी रिलीजन है, एंटी इस्लामिक है, एंटी नेशनल है, इसको बैन किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान इसको सपोर्ट नहीं करता है, ना ही ये हमारे मुल्क का नारा है, और जो लोग ऐसे नारे लगाते हैं उनके खिलाफ लॉ ऑफ लैंड के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल चिश्ती जी, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट आप रहे, क्योंकि अब मैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के पास जा रहा हूं। सोचने की जरूरत है हमें जी, बिल्कुल जी, हमें मजहब से ऊपर उठ के बात करनी होगी, हर पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये मामला हमारे राष्ट्र हित का हो चुका है। हम कब तक इन रेडिकल फोर्सेस के एजेंडे के ऊपर काम कर करके इनको सपोर्ट करते रहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से? हम लोगों को, हमारे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा समाज देना है, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामदान है, आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर के अगर हालात ये रेडिकल फोर्सेस खराब करते हैं तो इसके लिए हम सब लोगों को एक साथ आकर के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बिना किसी मजहब के एक हिंदुस्तानी बन करके काम करना होगा, और हिंदुस्तानी बन करके इन लोगों के खिलाफ हमें बाकायदा एक जंग की तरह ग्राउंड पे उतरना होगा और इन लोगों को जड़ से खत्म करना होगा। एब्सोल्युटली चिश्ती जी, एब्सोल्युटली चिश्ती जी, मैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के पास जा रहा हूं, क्योंकि व्हेन वी वर डिबेटिंग इट इन, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही। सदगुरु जी, तो आज उन सबको देखना चाहिए। सदगुरु जी, जो आप कह रहे थे, मुझे लग रहा है आप ही की वाणी, आप ही के शब्द चिश्ती साहब भी बोल रहे हैं, मूल, द वैल्यू इज द सेम, सदगुरु। And that's what the viewers you should see. India as a society should see today, viewers, that what Shri Sayyid Nasruddin Chishti and Sadhguru ji are saying. They are saying the same words. Rashtra Sarvopari, nation first. Sadhguru ji. Aishwarya, the true definition of religion or spiritualism is being and becoming. हम कैसे बचें, कैसे बढ़ें, लोग कैसे बचें और लोगों को कैसे बढ़ाएं, ये धर्म की परिभाषा है। धर्म और मजहब कभी भी इंसान के जीवन को इतना न्यूनता करके नहीं आंक सकते। धर्म के मूल में है आनंद, प्रेम और शांति, और चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, धर्म तो एक ही है। इंसान के जीवन को सुरक्षित रखना, इंसान के जीवन में वृद्धि लाना, इंसान के जीवन में आनंद, मुस्कुराहट, प्रेम और शांति लाना, ये धर्म की परिभाषा है। और राष्ट्र जब तक मजबूत नहीं रहेगा, राष्ट्र हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का है, अलग अलग लोग, अलग अलग पद्धतियां हैं पूजा। हम जिस स्कूल में पढ़ के निकले वहां सलीम भी थे, जॉर्ज भी थे, वहां मैं भी था, वहां हरविंदर भी थे, हम उस स्कूल से पढ़ के निकले। हमारे टीचर का नाम मोहम्मद आलम साहब, जो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते और प्यार से मुझे बाव कहते, और भारत पाकिस्तान का जब मैच होता और भारत जब जीतता तो मुझे जलेबियां खिलाते थे ला करके कि बाव, भारत जीत गया, हमारा राष्ट्र जीत गया, हमारा भारत जीत गया। मैं उस स्कूल से निकला। मैं हिंदुस्तान का एक सिविलियन हूँ, साधु बात में, और हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते आज जो एनएसए ने कहा है या चिश्ती साहब ने कहा है, वास्तव में यही बात पूरे देश में जानी चाहिए। इंसान के जीवन को इतना कम करके नहीं आंकना है। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर नहीं सकते, तो किसी जिंदा आदमी को मारने का हमें अधिकार क्या है? चाहे वो पहलू हो, अखलाक हो, दुनिया में कोई भी हो, कोई किसी रहीम को मारे, कोई किसी राम को मारे, कोई किसी हरविंदर को मारे, इंसान के जीवन को इतना कमतर करके नहीं आंकना है। और ये तभी संभव है जब हम ब्लेम गेम को बंद करेंगे, राजनीति स्वच्छ होगी। आखिर राजनीतिक दलों को भी, सामाजिक लोगों को भी, धार्मिक लोगों को भी ये सोचना होगा, हम टीचर हैं, प्रीचर हैं, लीडर हैं, कुछ भी हैं,
पर हैं भारतवासी, हैं हिंदुस्तानी, हैं इंसान। अगर इंसानियत बचेगी, भारत बचेगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां आनंद के साथ यहाँ रह पाएंगी। कोई हिंसा नहीं चाहता, कोई कट्टरता नहीं चाहता। और हम राष्ट्रीय चैनल पर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं पूरे भारतवासी से, सभी धर्म गुरुओं से, सभी व्यक्तियों से। केवल सरकार विपक्ष कह के ये गेम नहीं चल सकता, ब्लेम नहीं कर सकते। सदगुरु जी रितेश्वर सभी का जी, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जी, सदगुरु जी एंड चिश्ती जी, मैं बस 2 मिनट, सदगुरु जी मेरे को पता आपको जाना, लेकिन मैं 2 मिनट, आज आप देख रहे हैं, आर द व्यूअर्स वाचिंग दिस, what Chishti Sahib said exactly is what Sadhguru ji is saying, and what Sadhguru ji said is exactly what Chishti ji said. So that means viewers, Chishti Sahib, इसका मतलब है कि आप दोनों की सोच एक है, आप दोनों क्या एक एजेंडा क्लियर है कि राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, लेकिन it's also a reality, Chishti ji, and that's why the NSA viewers, Ajit Doval had to say this today, that if we sink together, we are sailing in the same boat. हम एक नाव में हैं, अगर किश्ती डूबेगी तो साथ में, और हम ये अलाउ नहीं कर सकते, ना चिश्ती साहब और ना सदगुरु जी, ये नाव डूबने नहीं देंगे हम किसी हाल में भी। तो चिश्ती जी, ये जो लोग धर्म या मजहब के पीछे छुपते हैं, इनके खिलाफ फिर समाज को भी आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति शुरू हो जाती है। जैसे ही आप दोनों शांत होंगे अगले 3 मिनट में, आप देखिएगा संजू वर्मा जी, फिरोज अहमद बख्श, प्रोफेसर गीता, सैयद असद अब्बास, अतीकुर रहमान, रत्नाकर त्रिपाठी आएंगे, and they will come and they will say that it's the BJP will say it's the Congress will say it's the SP will say it's the BSP. Chishti साहब, there is no end to it, there is no end to the political blame game. ये तो चलता रहेगा, but solution तो आप दोनों को साथ में आके निकालना पड़ेगा, because the society follows you, both of you. चिश्ती साहब पहले, एंड देन सदगुरु जी। जी, ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये हम सब एक नाव और एक ही कश्ती में सवार हैं। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से हमारी पहचान है। अगर हम लोगों को ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, और जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रेडिकल थॉट रखने वाले लोग हैं, ये अपने मकसद में कामयाब होते रहेंगे। ये आज वक्त की ज़रूरत है, हम सबको एक साथ आकर के इस मुल्क का नागरिक बन के इस मुल्क की वफादारी दिखाने की ज़रूरत है। इस मुल्क को एक बार फिर एक नए रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। समाज में रेवोल्यूशन लाना होगा, और वो रेवोल्यूशन लाने में सबसे ज़्यादा मददगार मैं समझता हूँ इस मुल्क के धार्मिक लोग होंगे, धर्मगुरु होंगे, क्योंकि ये मुल्क एक धार्मिक मुल्क है। और धर्मगुरुओं को एक प्लेटफॉर्म पर जिस दिन आ जाएंगे और एक फोर्स की तरह काम करेंगे इस रेडिकल फोर्सेस के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ इन लोगों को हम जड़ से ख़त्म करेंगे और इनके नापाक मंसूबों को इनमें कामयाब नहीं होने देंगे। बट आपको लगता है कि ये इतना आसान है? आपको लगता है कि ये जो लोग, क्योंकि यही मैं सदगुरु जी से भी पूछूं, चिश्ती जी, ये इतना आसान है? क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके समक्ष खड़े थे, द पर्सन हु वाज राइट नेक्स्ट टू यू टुडे मॉर्निंग वाज नन अदर देन द नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वो प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा ट्रस्टेड आदमी माने जाते हैं। और अगर उन जैसा पावरफुल आदमी भी ये कह रहा है, इसका मतलब रोड ब्लॉक तो है जी। सही कहा। देखिए, मुल्क के लिए उनकी फिक्र को हमें बहुत सीरियसली लेना होगा। जो आज उन्होंने अपनी फिक्र हम लोगों के सामने दिखाई या बताई हमें, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। देखिए, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए, आज एक मीटिंग में हमारे एक धर्मगुरु थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे के इतने विरोधी होते हैं, ये जब अलायंस करके सरकार बना लेते हैं, तो क्या हम धर्मगुरु एक साथ बैठ करके इस रेडिकल ताकतों के खिलाफ काम नहीं कर सकते? हमें एक साथ आना होगा। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और हिंदुस्तान का इतनी ताकत रखता है कि अपने मुल्क की एकता और अखंडता के लिए जान दे देगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होने देगा। ऐश्वर्य, सदगुरु जी, आप तैयार हैं चिश्ती जी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, इस देश विरोधी गैंग के खिलाफ खड़े होने के लिए? राष्ट्र प्रथम, इस राष्ट्र के लिए इस जीवन को भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिया है। इस राष्ट्र ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस राष्ट्र के लिए हमें जो कुछ करना होगा, प्रेम, शांति, अमन के लिए, वो हम सब करेंगे। और एक बात और ऐश्वर्य, वह पथिक क्या जहां बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जहां धारा प्रतिकूल न हो। धारा प्रतिकूल हो सकती है, पर नाविक का धैर्य हो, राष्ट्रवासियों का अगर धैर्य हो, तो निश्चित ही हम अमन, चैन, शांति और प्रेम का
पुनः भारत में स्थापना कर पाएंगे। हम सब मिलकर भटके हुए लोगों को भी समझाएंगे और कानून अपना कठोर काम भी करेगा, संविधान के अनुसार ये राष्ट्र चलेगा। और मैं प्राउड करता हूं कि मैं एक सेक्युलर कंट्री का, पंथ निरपेक्ष कंट्री का मैं एक नागरिक हूं। जरूरत नहीं इसे हिंदू राष्ट्र होने की, जरूरत नहीं इसे इस्लामिक राष्ट्र होने की। हम सेक्युलर होके खुश हैं, हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं जहां डाइवर्सिटी में यूनिटी है। ये राष्ट्र हम चाहते हैं और हम खुश हैं इस राष्ट्र से और हम सब मिलकर इसको करेंगे। यहाँ हमारे त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, अतिकुर रहमान बैठे हैं, सभी लोग, सभी मिलकर Sadhguru Shri Riteshwar Ji Maharaj, the country is watching you today. I would really request if you can extend your stay on the debate for 5 more minutes, sir. And Sayyid Nasruddin Chishti जी, मैं चाहता हूं आप रुके क्योंकि बहुत सवाल आपसे यहाँ बैठे लोग पूछने वाले हैं। आप 10 मिनट और दें। संजू वर्मा of the BJP national spokesperson. I have introduced the others. जी बिल्कुल, I have introduced. मैं चाहता हूं सिर्फ 5 मिनट आपसे माफी चाहूंगा जी जी, सिर्फ 5 मिनट और आपको रोक रहा हूं, फिर आपको नहीं रोकूंगा। अतिकुर रहमान, सैयद असद अब्बास। जी जी ठीक है। अतिकुर रहमान, आपने चिश्ती जी को सुना, बता सकते? कैन यू प्लीज टेल मी अतिकुर रहमान, what is that Mr. Chishti is saying wrong? Atikur Rahman, that you have to oppose him today? Or will you cross that line and say that no, Chishti ji is right and I stand with him? Nation first, Atikur Rahman. Let there be no doubt about it. Aishwarya, this is one of the proudest moments for me, for the nation, that 2 saner voices have come on your channel and they have done something very great. This is the real picture of India, the unity in diversity, and I salute both of them. I assure that we and our support will be for them, and this should be carried forward for all times to come. And there won't be any dividing forces which can, create any disunity amongst this unity today shown on your channel, Aishwarya. My support and my salute to both of them. चिश्ती जी सुन रहे हैं आप? ये अतिकुर रहमान जी मेरे को एक शब्द नहीं सुनते, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज द व्यूअर्स नो, देश जानते था अतिकुर रहमान कभी मेरे साथ एग्री नहीं करते। ही नेवर एग्रीज विद मी। चिश्ती एक साथ आकर के इस मुल्क के अमन अमान की फिजा को कायम और दायम रखेंगे। No, but it's important. It's important, Firoz Ahmed Butt, Sayyid Asad Abbas, while Chishti ji is there for 5 more minutes. Sayyid Asad Abbas. Okay, Aishwarya bhai, sabse pehle to I'd like to thank the Republic TV network for bringing in these 2 gentlemen. Mera salam hai Nasruddin Chishti sahab और रितेश्वर महाराज। माशाल्लाह, क्या बात कही आपने। आपने सलीम के बारे में कहा, जॉर्ज के बारे में कहा, आपके जो अब्दुल आलम हैं, आपके जो अध्यापक हैं, जिन आपके जो गुरु हैं, उसके बारे में कहा। Truly, I think Republic TV has set a wondrous moment today to me on Indian national television, seeing Dharam Gurus fight with each other on debates. But this is truly putting in the nation first. This is Mulla bhi aabe zamzam kya hai, Ganga bhi piye, Pandit bhi piye, पानी का मजहब क्या होगा। सलाम है मेरा आप दोनों पे। Truly we believe देश सर्वप्रिय है, था और हमेशा रहेगा। Because I truly believe, my dear friends, मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना, जो अल्लामा इकबाल ने कहा है। उसी के साथ मैं कहूंगा, ये जो सरतन से जुदा है, those who say सरतन से जुदा are absolute hypocrites. They must and should be put behind the bars. Because our Prophet Muhammad says, live for the country, love for the country, and die for your country. Hubbul Watan. Every religion. ये बात मेरी मानेंगे. And Aishwarya bhai, आखिरी बात, 10 seconds, I conclude, sir. The fact of the matter, this shows that this is whole a political blame game. We Muslim brothers love our Hindu brothers, and our Hindu brothers will protect us no matter what. But the problem begins when these political parties play the divisive game for the respective vote banks. That is the problem, Aishwarya bhai. Sanju Verma, Chishti ji and Sadhguru ji, both are coming together. They are saying we'll hold hands and we'll make sure that what the NSA wants, we will achieve it. Sanju Verma. Aishwarya, first and foremost, I think I need to congratulate Republic TV and you in particular
because you've managed to do the impossible, getting people from absolutely opposite ends of the spectrum to come together and converge on most important issue that we are currently grappling with, that is of radicalization. But I just want to say one thing, and I'm sure Chishti ji and Sadhguru ji will agree with me. I think what we need to do, which was mentioned today by Chishti ji, by NSA Doval, we also need to tackle the problem head on. And if you tackle the problem head on, that basically means that you have to recognize the problem of radicalization. You cannot be an ostrich with your head under the sand and say all is fine, because all is not fine. Be it Umesh Kole's killing, be it Praveen Nektaru's killing, or for that matter, be it the manner in which Kanhaiya Ram was beheaded in Udaipur. So we need to understand that global jihad, global radicalization, which has seen its fangs spreading across in India, especially in the last couple of months, this is something that we need to address. चिश्ती जी बीजेपी की नेत्री हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं संजू वर्मा, वो ये कह रही हैं चिश्ती जी कि ये प्रॉब्लम को, क्योंकि आपको जाना मैं इसलिए उनको रोक के आपके पास आ रहा हूं, चिश्ती जी वो ये कह रही हैं दैट द प्रॉब्लम का आखिरी सॉल्यूशन किसी एक संस्था को या एक आदमी को करने से नहीं, हिट मतलब यू हैव टू हिट द नेल वेयर इट मैटर्स, इसको जड़ से खत्म करना होगा, प्रॉब्लम को मानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और उसको जड़ से खत्म करना होगा, उस सोच को। जी चिश्ती जी, सबसे पहले तो मैं आपको रिपब्लिक चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आज आप लोगों ने इतनी अच्छी और इतनी हेल्दी डिबेट रखी है, सबके इतने पॉजिटिव थॉट आ रही है। देखिए आज हमारा जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद था वो यही था कि मुल्क में ऐसी पॉजिटिव थॉट रेज हो और लोग अपनी ज़बान से ऐसी सब पॉजिटिव बातें बोलें। अगर ये सही कह रही हैं जो मोहतरमा बैठी हैं कि हमें जड़ से ख़त्म करना होगा प्रॉब्लम को, किसी एक संस्था पे हम इल्ज़ाम दे करके पीछे वापस अपने कामों में नहीं लग सकते। अगर ये एक संस्था का इशू नहीं है, ये ओवर एंड ऑल इश्यूज है कि आज हमारे बीच में ऐसा क्या माहौल हो गया कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा की नज़र से देख रहे हैं, मजहबी इंतशार इतना बढ़ चुका है जो आज तक इस मुल्क में नज़र नहीं आया हज़ारों सालों से। क्यों नहीं आया कि ये मुल्क ऋषि मुनियों का मुल्क है, ये मुल्क सूफी संतों का मुल्क है, लेकिन उन्होंने कभी मुल्क के मामला राष्ट्र हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा, देखिए राष्ट्र को सर्वोपरि रख के हम चलेंगे तो कोई मजहब, कोई कानून हमारे को बाधा नहीं बनेगा कि ये सब चीज़ माहौल जो बन रहा है, रेडिकल की तरफ जा रहे हैं, दुनिया हमारे मुल्क के युवा जा रहे हैं, सोसाइटी जा रही है, इन सबको रोका जा सकेगा अगर हम राष्ट्र हित को ऊपर लेके चलेंगे। तो राष्ट्र हित अगर ऊपर है, मैं भूल जाऊं कि मैं हिंदू हूं, मैं भूल जाऊं कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, अगर इस नीयत से हम इस मुल्क में जिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस जड़ से सब चीजें खत्म होंगी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, how can you not like it? How can you still oppose Sadhguru Shri Riteshwar Ji Maharaj and Chishti Ji? How can the Congress still oppose it today? Sadhguru Ji and Chishti Ji are saying the same word, that they are ready to hold each other's hands and work forward. And to cull, I say, this anti-nation, this anti-national thought, they are ready to come together. What's your problem, Ratnakar Tripathi? You are basically biased. You see with your own spectacles, although you don't wear them. I belong so to you clear it now. You tell me the clarity. Highly revered person. You clear. Chishti ji sun rahe, Sadhguru ji sun rahe. Why can't the Congress do? Why can't the Congress come and say? I just say one thing, Ratnakar Tripathi. If Sadhguru ji and Chishti ji can come together for India, for nation first, why can't? What is the problem with the Congress party and the ego with which you move or your leaders move? That you can't come together, irrespective of BJP, Congress, the SP and the BSP, for the country, Ratnakar Tripathi, for the country, like Sadhguru ji and Chishti ji are coming. Why can't you? Answer this. Chishti ji is listening to you. Sadhguru ji is listening to you. Am I not audible to you, Aishwarya ji? You are. Please clarify. Am I not audible to you? Then, my lord, let me speak first. I beg your pardon. I beg before you. Let me speak. I belong to a very small town. Carry on, carry on. Bole. Small town, Varanasi, 700 meters from my place. Lived Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan. Ustad Bismillah Khan always used to say,
कि अगर सुर साधना है तो गंगा घाट पे आ जाओ, सुर सज जाएगा। बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपने को गाओ बजाओ, सुर सज जाएगा। He was the fourth generation of the artist who played in Hanuman Mandir of Balaji Ghat, and he claimed that he got enlightened there. When a sage came there, just appeared there and said, "Baja," and he said, "I was paralyzed." And then that sage smiled and said, "Ja, maja karega." We used to go in the procession of Noha, that Fatman, and we used to just weep with him. He used to go to the Chausatti procession of Hindus on Holi and played on Shanai a very folk song. I belong to that sect. We don't divide Hindu and Muslims. But you always blame me. You always blame me. That is an irony, Aishwarya. Because you know why. Congress. Because you know why. Congress Sadhguruji and is the Chishti ji. party Why do I blame? who wants I'll to tell you unite, I don't want to. hold No, the country Sanju ji, hold on. unite. Give me 30 seconds. Sadhguru Riteshwar ji Maharaj. Chishti ji. Today Chishti ji was standing shoulder to shoulder with the NSA and saying, yes, Sar Tan se Juda is a slogan which does not belong to India. ये हमारे संस्कार नहीं है. Sar Tan se Juda नहीं है. Why? Ratnakar Tripathi, you are too busy looking for your own leader who's a globetrotter now, that you are forgetting the priorities of this nation. Sadhguruji, I hope you understand what I'm saying. Sanjuji, hold on, I'm just coming to you. Geeta ji, I'm coming. No, Ratnakar Tripathi, can I only have for the last 1 minute? Sadhguruji and Chishti ji on air, please. Sadhguru Riteshwar ji Maharaj, short statement before you leave, sir. And same to Chishti ji. It's time that you and Chishti ji come hand to hand. And I would really like, if I can have both of you together in my studio soon, sir, so that the message can be given to those who feel that they can very easily divide. But I would just want to give a message to the country that it's a clear example how they will fail. And Chishti ji and Sadhguru ji are just not two individuals. ये दो लोग नहीं है सिर्फ. ये दो लोग नहीं है. ये भारत है. ये हिंदुस्तान है. And we are together. Sadhguru ji, 30 seconds. जी. ऐश्वर्या, जो भी लोग बैठे हैं, चिश्ती साहब भी बैठे हैं, आज एनएसए जी ने जो बोला, डोभाल जी ने जी, और हम सब इसी चिंता में और चिंतन में और कर्म में लगे हुए हैं निरंतर. कैसे लोगों के बीच जाएं, लोगों से वार्ता करें, लोगों के भीतर व्याप्त जो कट्टरता है, भय है, उसको मिटाएं. हम वर्क भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं. और मुझे यहाँ लगता है जितने भी लोग हैं भारतवासी, हम सबको यही करना है, इसी में आगे बढ़ना है. हमारी छोटी मोटी जो बातें हैं आपस में जो ब्लेम है, वो राजनीतिक रूप से पार्टियों के कुछ अलग हो सकते हैं, मजहबों के कुछ अलग हो सकते हैं, अलग स्कूलों के अलग होते हैं, अलग मोहल्लों के अलग होते हैं, राज्यों के अलग कल्चर होते हैं. वहाँ कोई भेदभाव नहीं है. हमें राष्ट्र के लिए एक होना है और इंसानियत को मरने नहीं देना है, इंसान को भी मरने नहीं देना है. मैंने फिर से कहता हूँ कि अगर मुझे किसी को जिंदा करने का हक नहीं तो किसी को मारने का भी हक नहीं. हम सबको जीवन दें, अच्छा जीवन दें, अच्छी बातें दें. धर्म की परिभाषा फिर मैं आपको बता देता हूं, बीइंग एंड बिकमिंग. खुद बचें, खुद बढ़ें, सबको बचें. चिश्ती जी आपके आखिरी कमेंट्स, उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं. चिश्ती जी देखिए, मैं तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपना अपना धर्म अपने अपने पास रखें और जब घर से निकलें तो भारतीय बन के निकलें, हिंदुस्तानी बन के निकलें. मुझे पूरा विश्वास है, अगर हम हिंदुस्तान को, अगर इस भारत को अपने दिल में संभालेंगे तो मैं सबसे दिलों से नफरतें सबकी खत्म हो जाएंगी और सब हिंदुस्तान को सर्वप्रिय मान के चलेंगे, अपना मुल्क मान के चलेंगे, तो ये नफरतों की बात नहीं आएगी, कहीं भी नहीं आएगी. और इंशाल्लाह ताला हम साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ मरेंगे इंशाल्लाह ताला. एक साथ हैं, हम एक साथ. सदगुरु जी कुछ आपको कह रहे हैं चिश्ती जी? हाँ, मैंने सुना, चिश्ती जी को सुना. एक साथ जी, सदगुरु जी का मैं ज्यादा करना चाहता हूं, उनके अल्फाज का मैं एहतराम करता हूं. हमारा भारत महान है और भारत महान ही रहेगा और इसकी महानता यही है कि हम तमाम लोग सदियों से साथ में रहते आए हैं और ता क़यामत तक साथ मिलजुल के रहेंगे. चाहे नापाक इरादे रखने वाले मुल्क के दुश्मन कितनी कोशिश कर लें, ना तो हिंदुस्तान झुकेगा और ना ही हिंदुस्तान बटेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का. थैंक यू वेरी मच, both of you. And if I can just have the debate now. Thank you. Professor Geeta Bhatt, I haven't come to you. Firoz Ahmad Bhatt, I haven't come to you. Professor Geeta Bhatt,
please tell me one thing. बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी. Professor Geeta Bhatt, please tell me what was wrong today that was said that the opposition needs to oppose this as well. Give me one reason that the opposition needs to oppose this for. If Sadhguruji and Chishti ji are coming together, if India is coming together holding hands, why and how does the opposition needs to oppose? Geeta. Professor Geeta Bhatt. Well, Aishwarya ji, it is very unfortunate that the opposition is trying when such a initiative has been taken, and so these kind of interfaith conferences, the kind of positive vibes that they are creating in the society, and especially keeping in mind that there have been very, very acrimonious environment, which there are certain agencies and certain organizations which are trying to destabilize the internal security of the nation. At such a time, all the political parties, they need to, rise above petty politics and think in terms of national security and internal security of the country. Also, in today's conference, what NSA Ajit Doval ji has said is very important. That it is not only that we need to condemn what has happened in the past couple of months. We also need to counter it, and for countering it, we need to get down on the ground and need to sensitize the youth from the communities where this kind of radicalization is being done. This is something which is very urgently required. And these Atikur Rahman, please tell me. Atikur Rahman, please tell me. Atikur Rahman and Firoz Ahmed Baq. Atikur Rahman and Firoz Ahmed Baq. Sanju Verma, I'm coming to you. I know you want to speak. Right. Give me 30 more seconds. Atikur Rahman, tell me. Let me begin. Is this not the time? Let me begin. Atikur Rahman, is this not the time? Atiq Saab. No, Firoz Ahmed Baq, hold on. Firoz Ahmed Baq, hold on. Atikur Rahman first. Atikur Rahman, can you please tell me, is this not the time? Firoz Ahmed Baq, kindly hold on, sir. Atikur Rahman, is this not the time to hit those who have deliberately made this hate speech a formula to disturb the peace of our country? Atikur Rahman, you should come together like Chishti ji and Sadhguru. You should come together today with Sanju Verma and say that I stand with you, Sanju Verma, and let's hit them together. We all Indians stand with the government of India. We all should stand because it's a matter of national security. As Sadhguruji said, that this is not a matter of personal religiosity, but a matter of national importance. How can we deny that if hate is, besieging our nation, we can live in peace? No, we cannot compromise on this front. Aishwarya, you can rewind. I was on your channel with your editor-in-chief Arnab Goswami, with Niranjan, and I deliberately mentioned that the Home Ministry should take the lead. Call these ulemas, all religious leaders, interfaith council, and they will sign a statement saying that these Sartan se juda slogans should be having an antidote. And here today you have found that antidote. Firoz Ahmed Baq, 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 and the Sufi sons. Just a minute, give me a... This will never be demolished. Please, Rahman Saab, you have said your thing, you have said very sensible. Just a minute, I appreciate you, Rahman Saab, you are very sensible today. And someone in this debate started on a discordant note by casting aspersions at Aishwarya Saab. Now let me start with a positive note. Let me congratulate Republic TV, let me congratulate Sufi Saab, Sufi Nasiruddin Saab, let me also congratulate Ajit Doval Saab and Riteshwar Saab. Just a minute. And there's a couplet by my Urdu Shair friend Afzal Manglori. कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना. And then I am also reminded of Kabir. Kabir said we should never look into the eyes of a person as a Hindu or a Muslim. We should look as a human. We should never play a Hindu card or a Muslim card. The only card that we have to play is India card. And having said that, finally, let me tell you one thing. What is happening? Abbas was saying, it sounds very melodious. It sounds very sensible. Firoz Ahmed Baq, it sounds very, very sensible, sir. But what's happening on the ground? Right.
You are right. प्लीज जब सर तन से जुदा की बात होती है और सर तन से जुदा कर भी दिया जाता है, सामने वाला जब देखता है तो कहता है अरे ये कह कुछ रहे हैं, कुरान का हवाला दे रहे हैं, ये कहते हैं हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, हो क्या रहा है? यू आर राइट, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू. वी हैव टू डू अवे विद दीज थिंग्स एंड आई ऑल्सो साइड विद Sanju was saying there is need of some very strict action. Fast track courts have to be there. Finally, let me tell you, all the Muslims of this country, they are well-meaning, they are patriotic, they are nationalists, संस्कारवादी, राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त. कुछ लोगों ने उन पे ढक्कन कस दिया है, जैसे डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं, धीरे धीरे एक ढक्कन भी खुलता जाएगा. आप हैं, रिपब्लिक है, हम लोग हैं, इस ढक्कन को हम ये जो बदरू है इसको निकाल के मोहम्मद पीस बी अपॉन हिंदुस्तान के बारे में ही सेड कि ठंडी हवाएं हिंदुस्तान की जानिब से आती हैं. राइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू बिलीव इन. Absolutely, Sayyid Asad Abbas and Sanju Verma. Sayyid Asad Abbas, Sayyid. Sayyid Asad Abbas and Sanju Verma. The matter here is, I'm very glad, undoubtedly, Sayyid Asad Abbas to be a part of this debate several times. Let me tell you, as a matter of fact, on record, Aishwarya Bhai, this is the first time where I haven't missed Arnab Goswami on a debate. I must tell you, my friend, you're doing a spectacular job. For the fourth pillar of the Constitution, this is the way to go. And the second point, I'd like to take a leaf from my dear friend Feroz Bhakt. मेरे बड़े भाई हैं वो, जैसे संजू वर्मा जी मेरी बड़े बहन है. We may not agree on many fronts, but Feroz bhai, the couplet you said, with that I'd like to say, sir, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है. I think it is time to dissolve all religious differences and go ahead. Absolutely. Undoubtedly, wonderful. Nation first must and should be the way to go. But Aishwarya bhai, a simple question I'd like to ask my dear sister Sanju Verma ji. Over the last 8 years, coming in Sanju ji, after standing with you, you've called for a ban of the PFI. 8 years, you as a spokesperson have been parroting the line, ban karenge, ban karenge, ban karenge. 2014 you were in power. 2019 you are in power. But you have not banned the PFI. What? Coming Sanju Verma, hold on 10 seconds. I think it is high time that you must take the lead. Thank you. Patience. Ban the PFI. You can't keep telling me. I'll give you time. I'll give you time to respond to all. Take a point now. I'll give you time to respond to all. Just let him complete. Thank you. Let us all Aishwarya, I'm not allowed to complete. Can I just... Yeah, Sanju Verma. Sanju Verma, because this is what we have to do to make India the fact of the matter. Sanju Verma is responding now. Hold on. Let me take Sanju Verma is responding now. Sanju Verma is responding now. Hold on. Thank you very much, DJP. Mr. Abbas, Okay, Sanju Verma. Yeah. I just want to say one thing. This whole narrative about, why is the BJP not banning the PFI? So I just want to say one thing very categorically. I've said this on umpteen shows, which were anchored by Arnav as well, that there are section 13, 16, 17, 18 and 19 of the UAPA. Now, section 13 is something which the central government has complete control over. But section 16, 17, 18, 19, under which PFI can be banned, wide sections of the UAPA, these sections come under respective state government. अभी ऐसा हुआ है कि केरल में भी लेफ्ट की सरकार थी, they had banned PFI. Congress also banned PFI. Kerala High Court overturned it. Jharkhand banned PFI. The Jharkhand High Court banned it. So what the Modi government is doing is ensuring that there is a watertight case. Tushar Mehta, the representative for the Modi government, in front of the Supreme Court in April 2021 said, when we do make a watertight case, we will ensure that PFI is banned. Ratnakar Tripathi also. But Aishwarya, 20 seconds, I just want to say one thing. Sir, tan se juda ye galat nara hai. 30 more, carry on. Hind galat nara hai. Nara-e-takbir galat nara hai. पर यहाँ बैठकर आप ये भी जरा सोचिए कि 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था, Muslims have the first right to national resources. और अभी allow me to counter that, please. Allow me to counter that. I need to counter on one point. Asad, hold on. Appeasement Asad, hold on. by the Congress is at the root cause of every problem. Let us not shy away from calling out the appeasement. Ratnakar Tripathi, stop smiling today. Ratnakar Tripathi, you need to say, you need to accept where you were wrong and say that today you will change that, Ratnakar Tripathi. Say that today. On live television, say that today, that you will change that. Ratnakar party who belong to Congress. Firoz, hold on, yeah. Ratnakar Tripathi, please. Ratnakar Tripathi. 2006 में
Sanju ji, thank you. Ratnakar Tripathi. Yeah. Yes, yes. Sanju ji, thank you. That is Ratnakar why Tripathi. Ratnakar Tripathi. that's why I call BJP a That's why I call BJP a bahute jhutti party. That is BJP. That is the problem. In 2012, you cannot see beyond August BJP, 2012, Oman Chandi of Congress banned the freedom parade of PFI. Sanju Verma, hold on now, please. Gave it in writing in an affidavit to the High Court. Multi. Oman Chandi gave that affidavit that it is a resurrection of Simi, and that is why we have banned this freedom movement. They don't have the power to ban the organization. And Asad Abbas, Sayyid Asad Abbas, Atikur Rahman. Don't be Sayyid Asad Abbas, Atikur Rahman, Ratnakar Tripathi. Firoz Ahmad Bhatt, Professor Geeta Bhatt and Sanju Verma, I only believe one thing, viewers. No, all of you, I just believe one thing. By banning one organization, isn't Simi banned? Another organization propped up. If this is propped up, another will prop up. We need to understand. It's the thought process. जैसे कहा सदगुरु जी ने, सोच को खत्म करना, इस देश विरोधी सोच को खत्म करना है. And I am very happy that Atikur Rahman and both Sayyid Asad Abbas, Sanju Verma today came and said that like Sadguru Riteshwar ji Maharaj and then Sayyid Nasiruddin Chishti came together, holding hand in hand. We are also ready to come. But Rashtra Sarvopari, nation first, that needs to be an anyone who needs to play this hate speech game and then go and hide behind religion cannot be allowed by the society to do so. Let us viewers come together on this as a society and say that this is not going to be allowed because no religion, irrespective allows this and say this is right. No religion says this. No religion. The politics will carry on and so on, and so is this debate. Thank you very much, all of you. Thank you very much. That's it in Burning Question. Amity University has India's largest scholarship program, from which over 25,000 brilliant students have already benefited. Students with over 95% in Class 12 boards get 100% scholarship, and students with over 90% get 50% scholarship. Join brilliant like-minded students who want to be successful. Apply at amity.edu/scholarships. Prime Minister Narendra Modi will be addressing the first ever inaugural session of the first national meet of District Legal Services Authorities at Vigyan Bhavan today at around 10 a.m. Union Home Minister Amit Shah scheduled to address the National Conference on Drug Trafficking and National Security in Chandigarh today. Chief Ministers of Haryana, Himachal Pradesh and Punjab, officers from the Border Security Force, National Investigation Agency and Narcotics Control Bureau, as well as Anti-Narcotics Task Force chiefs of respective states and members of Narco Coordination Center will also be present at the conference. Me and my Vijay are together. Absolute pandemonium, chaos, in fact, massive security thrown around. Big push diplomatic visit, which is going to be, of course, capped by the Quad leaders meets. Uddhav surrounded himself with unelectable coterie. You expect these people to dictate terms to a grassroots strong leader like Eknath Shinde? And in other national news, in a fresh trouble for sacked TMC Minister Partha Chatterjee, sources have now informed that Partha's aides Manik Bhattacharya and Sukanto Acharya have been summoned and will be interrogated in the Bengal cash scam. The Indian Army recently completed constructing a 170-foot bridge at the behest of the civil administration in Jammu and Kashmir's Kishtwar. The bridge was completed ahead of the Machel Mata Yatra that will be undertaken in the region in the second week of August. Connectivity had been affected after rains lashed through the area in mid-July, washing away the bridge along the water body it was built on.
the forces encountered several challenges as they navigated the inhospitable terrain and rough weather conditions, with added issues of restricted space and having to carry supplies manually. As a testament to the efficiency of the forces, the bridge was constructed and fixed well in time before the Yatra to be held next month. Bureau Report, Republic TV. आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पे अब पूरी की पूरी प्रिपरेशन की जा रही है। किसी भी समय यहाँ पे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री आने वाले हैं। ये मिनट टू मिनट आर टू आर पेट्रोलिंग इस समय दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोलिंग हो रही है। शरद पवार का पहले ट्वीट आया, उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है एनसीपी एज अ पार्टी शपथ ग्रहण में यहाँ पे मौजूद होगी। Australia enjoyed a successful opening day of the track or cycling competition as they led the way with 3 golds and a bronze, while New Zealand won 2 events. Paracyclist Neil Fashey claimed his first 5th gold medal overall and Scotland's first this year at the paracycling event of the Games on the first day. Australia dominated at the swimming pool on the opening day of the competition, which included 2 All-Australian podium lockouts in the men's 400-metre freestyle and women's 200-metre freestyle finals. And England has become the first nation to win 3 successful gold medals for the Commonwealth Artistic Team Gymnastics events. Wherever you are, whenever you want, Republic Live Stream with you everywhere. Republic Live Stream, India's #1 streaming news. Prime Minister Narendra Modi will be addressing the first ever inaugural session of the first national meet of District Legal Services Authorities at Vigyan Bhavan today at around 10 a.m. Union Home Minister Amit Shah scheduled to address the National Conference on Drug Trafficking and National Security in Chandigarh today. Chief Ministers of Haryana, Himachal Pradesh and Punjab, officers from the Border Security Force, National Investigation Agency and Narcotics Control Bureau, as well as Anti-Narcotics Task Force chiefs of respective states and members of Narco Coordination Center will also Ahead of August 15 that marks 75 years of India's independence and the Har Ghar Tiranga campaign to accompany the celebrations, prisoners of Ghaziabad jail were seen making flags in anticipation of 3-day event. The act was witnessed at the Dasna jail at Ghaziabad in national capital. Inmates across jails have reportedly been trained to pay attention to the ratio of the colors in the flags that they produce. The manner in which the flag is to be produced needs to follow strict rules in accordance with the sanctity of the flag. The flags are being prepared as a part of 75 years of Indian independence being commemorated as the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Bureau Report, Republic TV. To that last salute once again. Ranchi's Birsa Munda Airport receives a threat to blow up the airport on July 29th via text message with a demand of 20 lakh rupees. Following the threat, airport officials have informed that police are taking the necessary action and an investigation too has been launched into the case. This week, watch Checkmate to know why India is buying the latest arms and ammunitions. Why is India getting the latest defense technology from the world? Why is India arming itself at such a rapid rate?
But I will tell you what I believe. I believe India has global ambitions. I believe India wants to be a global leader. When India says that it wants to become a Vishwaguru, it is not just talking about intellectual pursuit. It's not just talking about soft power. India is also talking about hard power. Australia enjoyed a successful opening day of the track of cycling competition as they led the way with 3 golds and a bronze, while New Zealand won 2 events. Paracyclist Neil Fashy claimed his 5th gold medal overall and Scotland's first this year at the paracycling event of the Games on the first day. BJP President JP Nadda was seen at the Patna airport ahead of a rally. He was scheduled to participate in the capital city of the state. BJP leader Ravi Shankar Prasad spoke to Republic on the visit and the purpose it served. First of all, Nadda ji has already landed. We welcomed him. Even Amit Shah ji is coming, Honorable Home Minister. You must understand what this program is about. This program is an organizational program whereby all the All India office bearers and state president of Yuva Morcha, Kisan Morcha, Dalit Morcha, Mahila Morcha have come. The national president had earlier appointed a leader named Mahendra Bhatt as the new state president of the BJP in Uttarakhand. Amidst a mega backlash against Kejriwal government's liquor policy, officials have now informed that the Delhi government is mulling rolling back the policy. This comes after Lieutenant Governor recommended a CBI probe into the implementation of the new excise policy of the government of Delhi. Hitting out at the Kejriwal government over the decision to roll back the liquor policy, BJP IT cell head Amit Malviya asks, if the new excise policy of Kejriwal is not a mega scam, why is the government rushing to revert to the old policy after CBI inquiry was ordered? In other words, it is an admission of violations, corruption and loss to exchequer, as pointed out. To that last salute once again. Ranchi's Birsa Munda Airport receives a threat to blow up the airport on July 29th via text message with a demand of 20 lakh rupees. Following the threat, airport officials have informed that police are taking the necessary action and an investigation too has been launched into the case. This week, watch Checkmate to know why India is buying the latest arms and ammunitions. Why is India getting the latest defense technology from the world? Why is India arming itself at such a rapid rate? But I will tell you what I believe. I believe India has global ambitions. I believe India wants to be a global leader. When India says that it wants to become a Vishwaguru, it is not just talking about intellectual pursuit. It's not just talking about soft power. India is also talking about hard power. Australia enjoyed a successful opening day of the track of cycling competition as they led the way with 3 golds. India opens its medal count with a super silver in the 55 kilogram weightlifting to Sanket Sargar from Sangli. Guru Raj Pujari wins a bronze in 61 kilogram weightlifting at the Commonwealth Games. ED raids Arpita's residence in Belgorod. Search on for the missing luxury cars continues. Arpita's driver makes startling revelation, says the missing cars were at Arpita's residence when he was employed, but only one Honda City parked now since 3 months. Arpita's mother, while speaking to Republic, cries conspiracy distances itself from Partho Chatterjee. CBI attaches Augusta Westland chopper parked at a Pune helipad in the DHFL scam case. Big breakthrough after NSA Ajit Doval attends Interfaith Harmony Conference.
All India Council of Sufi Leaders signs resolution seeking ban on PFI. Court rejects Teacher Setalwar and RB Srikumar bail plea. Amidst mega backlash over the excise duty policy, Kejriwal government forced to roll back liquor policy. Home Minister Amit Shah says drug trafficking and cryptocurrency are interlinked. It's a threat to national security. You're watching Republic TV. I am Shivangi Shukla. In a big breakthrough at the Inter-Religious Conclave, the All India Council of Sufi Leaders signed a resolution demanding a ban on the Popular Front of India. Notably, the conclave was attended by National Security Advisor Ajit Doval. Here is the full story. NSA Ajit Doval chaired an inter-religious meeting in Delhi. शहजादा नशीन लोग, धर्म गुरु लोग यहाँ पर जो बैठे हैं भिन्न भिन्न धर्मों के, और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं इस इजलास में, उन सबको मैं अपना सलाम कहता हूँ, मेरा अभिवादन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम. At the conference, NSA Doval called for a concerted effort against radical elements and spoke of a door-to-door campaign to remove misunderstandings among India's minorities. हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं, और जो नहीं भी हैं उन तक भी हमको पहुँचना है कि जहाँ पर लोगों के अंदर में ये एक जज्बा पैदा किया जाए, वो इमोशन पैदा किया जाए कि हम किसी को भी अपने देश की अखंडता, अपने देश की यूनिटी, अपने देश की एकजहती, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे. Notably, the All India Sufi Sajjada Nashin Parishad Chief Hazrat Sayyid Nasiruddin Chishti shared his insights on how to curb growing fundamentalism. चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मदद से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में अभी मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है PFI का, चाहे वो हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन. और हम धर्मगुरु एक बीड़ा उठाएं, एक अहद करें कि हम इस मुल्क को ना तो बंटने देंगे और ना ही रेडिकल फोर्सेस के आगे झुकने देंगे. इसी मकसद को लेकर हमने आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया है. Speaking to Republic TV, Hazrat Chishti said this. PFI का नाम चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पिछले 2 महीने से हम सुन रहे हैं. हर इंसिडेंट में PFI का नाम आ रहा है. PFI हो या उससे संबंधित और भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो रेडिकलिज्म की तरफ लोगों को ले जाते हैं, अगर उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हैं तो उनको बैन किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. इस मुल्क के आइन के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और क्योंकि वो बदनामी का बाइस हो रहे हैं मुल्क के लिए भी और मजहब के लिए भी. नसरुद्दीन चिश्ती के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया था, ये अलग अलग शहरों में भी करेंगे, और इससे कितना फर्क पड़ता है हिंदुस्तान के जिस तरीके का माहौल बन रहा है उस माहौल पर, ये देखने वाली बात होगी. This call to ban the PFI comes at a time when the wife of the key accused in the Karnataka hate killing case made this sensational claim. 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಗಾರ್ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್? ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ? PFI ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. SDP ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. With prominent Sufi leaders like Nasiruddin Chishti calling for anti-radical campaigns, will organizations like the PFI finally be banned? Isn't it time for a crackdown on radicalism? Speaking to Republic TV at the gathering of the BJP in Bihar, Ravi Shankar Prasad, after speaking about the strength of the NDA alliance, spoke about the issue of schools in the state having holidays on Friday. Various schools spread across Bihar in Simanchal area are shut on Fridays and open on Sundays. Your state president Sanjay Jaiswal has raised this issue and said that he will raise it in the parliament, that this is wrong, violation of rules and regulation, constitution. Well, I can only say that the norms of the country are very clear. Everywhere the schools are closed on Sunday. We respect all the faiths and all the religions, okay?
Therefore, beyond this, I have nothing more to comment on what the state president has said. I have conveyed my individual view, namely, there must be uniformity as far as holiday is concerned. Union Home Minister Amit Shah is also expected to be in Patna tomorrow as several leaders of the BJP and various morchas gather for the Pravas Yatra. Bureau Report, Republic TV. Top national updates: 2 back-to-back medals for India at the Birmingham Commonwealth Games 2022. Sanket Sargar and Gururaj Pujari win silver and bronze medals respectively in the different weightlifting events. Sanket Mahadev Sargar won India's first medal at the 2022 Commonwealth Games after he clinched silver in the men's 55 kg weightlifting event. Sanket Sargar won the medal after lifting a combined weight of 248 kg in the snatch, clean and jerk categories. Sanket Sargar, who dedicated his Commonwealth Games silver medal to the people of India in its first statement after win, said that he was eyeing for gold. Weightlifter Gururaj Pujari gave India the second medal at the Commonwealth Games with his bronze in the men's 61 kg category. Gururaj finished third in the standings with a total of 269 kg lift. PM Modi launched the Ministry of Power's flagship revamped distribution sector scheme, which aims at improving the operational efficiencies and financial sustainability of the DISCOMs and state power departments, which was first announced in May. RDSS, which is the second such scheme in 2 years to support the beleaguered power DISCOM. During an interfaith meeting attended by NSA Ajit Doval, All India Council of Sufi leaders passed a resolution seeking ban on PFI and other radical outfits. जो रेडिकलिज्म की तरफ लोगों को ले जाते हैं, अगर उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हैं तो उनको बैन किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इस मुल्क के आइन के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और क्योंकि वो बदनामी का बाइस हो रहे हैं मुल्क के लिए भी और मजहब के लिए भी. Mega backlash over his statement, saying that if Gujaratis and Rajasthanis are removed from Maharashtra, especially Mumbai and Thane, no money would be left in the state and it would cease to be the financial capital of the country. Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari issued a clarification saying that he respects Marathi-speaking people and their contributions to the state's economy. More than 30,000 kilograms of narcotics was taken out from 4 locations across the country in the virtual presence of Union Home Minister Amit Shah. The drugs were disposed of by Narcotics Control Bureau teams in Delhi, Chennai, Guwahati and Kolkata in the presence of Home Minister. Viewers, Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari landed in a controversy after he said that if Gujaratis and Rajasthanis are taken out of Maharashtra, the state will have no money left. Former Maharashtra CM Uddhav Thackeray launched an attack on Koshyari over his comment. Here is a report on the controversy that followed next. Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari landed in trouble for saying that if Gujaratis and Rajasthanis are taken out of Maharashtra, the state will have no money left during a speech. कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं. ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं. कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं. ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं.
This sparked a row of criticism, and Congress leaders Jairam Ramesh and Sachin Sawant also tweeted the video and said that the governor should not have made the remarks. Maharashtra Congress chief Nana Patole condemned the governor's remarks and called for his immediate removal. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। गुजराती मारवाड़ी की वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde also broke his silence over the ongoing controversy, saying nobody should belittle the contribution of the people of Maharashtra and the hard work of Maharashtrians making Mumbai the financial capital, as well as the people who come to find work in Mumbai, and the credit for all this goes to the Marathi Manus. राज्यपाल जी का जो बयान है उसमें हम लोग सहमत नहीं है। हमारे जो हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका खुलासा किया है। Koshyari's office issued a clarification saying there is no question of underestimating the contribution of the people of Maharashtra and that appreciating one community is never an insult to another community and political parties should not create controversy over it without reason. He said the people of Maharashtra will never be insulted by him. Bureau Report, Republic TV. The Prime Minister addressed the inaugural session of the first All India District Legal Services Authorities meeting. At the meeting, Prime Minister Modi spoke about issues pertaining to the judiciary and provision of justice to everyone. आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। Prime Minister Modi further spoke about how the legal infrastructure was being overhauled in the country via a digital revolution. Bureau Report, Republic TV. Top national updates: the mortal remains of Lieutenant Adivitya Bal, one of the pilots of the MiG-21 fighter jet that crashed in Rajasthan, were brought to his hometown in Jammu and Kashmir. 2 pilots were killed when a MiG-21 fighter aircraft crashed in Rajasthan's Barmer district on Thursday evening. A wreath-laying ceremony was held at the Air Force Station in Jammu and Kashmir as the valley mourned the loss. Amidst Congress sexism and insult row, Union Defence Minister Rajnath Singh met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. This comes after Union Home Minister Amit Shah and Union Minister Smriti Irani met President on Friday. PM Modi said that the ease of justice is equally important as ease of doing business and ease of living. Addressing the inaugural session of the first All India District Legal Services, PM said that the ease of justice is as important resolution in this Amrit Yatra of the country. आप सब यहाँ संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहाँ
सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं. BJP National President JP Nadda held a mega roadshow from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar statue near Patna High Court to Jayaprakash Narayan statue near Gandhi Maidan today. The roadshow comes ahead of the National Executive Meet of Frontal Leaders and is a first for Bihar. JP Nadda appointed Mahendra Bhatt as the president of the party's Uttarakhand unit, replacing Madan Kaushik. Mahendra Bhatt was an MLA from the Badrinath Assembly seat twice and reportedly has a stronghold in the BJP organization besides his popularity in Garhwal and Kumaon region. ABVP activists staged a protest against Karnataka Home Minister there following the murder of BJP leader Praveen Netaru in Dakshin Kannada district. Activists also protested in front of Home Minister official residence in Bengaluru, demanding resignation of the minister, further alleging that the minister was not capable enough to handle the situation. After two recent murder cases, Siddaramaiah attacked Karnataka CM Bommai, further demanding his resignation over the law and order situation in the southern state. Nearly 21 have been detained for questioning connection with the Mangaluru youth murder case. Police have informed that investigation is underway and arrests will be made soon. A few Muslim leaders boycotted the peace meeting at the DK District DC office today. The members of Muslim Central Committee and Dakshin Kannada United Muslim Community instead held a separate meeting. Reportedly, the leaders are unhappy that CM visited Praveen's house and not Fazil's. And shocking visuals emerging from Rajasthan's Khamera village. A husband ties his wife to a tree for about 7 hours and then beats her. The incident was reported on Friday, and after the video went viral, police have launched a case and 5 have been detained so far. A gruesome incident has been reported from MP Sehor district. While the district celebrates the end of its panchayat election, it is no more a happy win for the winning candidate. Watch how a youth identified as Rakesh Lodhi gets beaten up with sticks right after his win. Unable to take the loss of not winning the panchayat election, Hemraj Lodhi, Surat Singh Lodhi and his son beats up the youth, taking out revenge on him. They even beated up Rakesh's assistant as well and was heard abusing him too. Watch how these assailants brutally hits Rakesh in the broad daylight while Rakesh pleads for mercy. Notably, the police were informed and admitted him into a district hospital for treatment. Meanwhile, police officials said that the case has been registered against the accused and strict action will be taken. Bureau Report, Republic TV. Much more coming up on the other side, viewers. CBI attaches Augusta Westland chopper parked at a Pune helipad in the DHFL scam case. ED raids Arpita's residence in Belghoria, search on for the missing luxury cars. Reading allows us to become familiar with ourselves. We don't read, we won't know what is knowledge. I just find it very interesting to know people's lives, how they went through certain situations, how they dealt with things. So wherever you want to go in life, if you read books along those lines, then that would really help you in growing. Reading could mean a million different things to every individual. What does it mean to you? Visit readindia.info to find out more. Police vans have also come in right now just to give the security to the BJP legislators right now as they are staying here for a while before the government formation actually takes place. About 17 locations where these searches are being carried out. In all likelihood, the number is going to go up. There could be some arrests. Total of 8
CCTV footages that have been accessed. This encapsulates Kohli's murder that has taken place. On the live coverage on Republic TV as we report from outside Raj Thakre's residence. The Chief Minister of Maharashtra vacates his residence. Sena supporters coming out in large numbers showing their support to Uddhav Thakre. The NCP huddle has begun. We're keeping a close track on all the senior leaders coming in and going out. The mortal remains of Lieutenant Aditya Bal, one of the pilots of the MiG-21 fighter jet that crashed in Rajasthan, were brought to his hometown in Jammu and Kashmir. 2 pilots were killed when a MiG-21 fighter aircraft crashed in Rajasthan's Barmer district on Thursday evening. A wreath-laying ceremony was held at the Air Force Station in Jammu and Kashmir as the valley mourned his loss. Take a look. The nation mourned the loss of its brave heart as Flight Lieutenant Aditya Bal was laid to rest with full military honours. Hundreds gathered for Flight Lieutenant Aditya's final farewell. ये उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी, ये बाड़मेर में थे और ये MiG-21 उड़ा रहे थे। ये हम एक छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बच्चे ने हमारे खानदान का, हमारे गाँव Viewers, some big news coming in. Mirabai Chanu has won gold in the Commonwealth Games. She has taken home the gold, viewers. This is a big news coming in. This is the first gold for India in the Commonwealth Games 2022. The day two saw a silver, it saw a bronze, but right now what we can tell you is that Mirabai Chanu has won gold in the Commonwealth Games. Earlier that she was leading in the way in the women's 49 kilogram snatch event, and after leading, what we have learned is that she has won gold. Very, very big news coming in because this is the first gold for India at the 2022 Commonwealth Games. Indian athletes continue to make the country proud. The Indian weightlifter Mirabai Chanu has now won the gold. Now remember, just a short while back, we also told you that we had got a gold, not a gold, but a silver earlier and a bronze. And right now, as you can see on your screens, Mirabai Chanu lifting her way to the gold. She is India's golden girl at this point of time. Big news coming in. Remember that India opened its medal count with a super silver from Sanket Sargar, and Gururaj Pujari won a bronze in the 61 kilogram weightlifting event at Commonwealth Games 2022. But right now, viewers, it's a gold. It's a gold, that too coming in from Mirabai Chanu. There were a lot of expectations from her earlier, and she has fulfilled them. Yogeshwar Dutt is joining me on the phone line. Yogeshwar, ये जो हमने एक्सपेक्ट किया था मीराबाई चानू से कि वो गोल्ड लाएगी, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वो हो गया है. मीराबाई चानू हैज गॉट द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022. देखिए बिल्कुल, और ये बड़ी खुशी की बात है भारतीय दल के लिए और हम भारतीयों के लिए कि मीराबाई चानू ने जो प्रदर्शन ओलंपिक में किया था सिल्वर मेडल के साथ और आज गोल्ड जीता CWG में, ये बड़ी खुशी की बात है. और शायद 3 मेडल आज यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के वेट लिफ्टिंग से 3 मेडल हमें आज मिले हैं. ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है और हमारा यही है कि ये प्रदर्शन बेहतर होगा और ज़्यादा, और हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेडल जीतेंगे और जो पिछली बार का प्रदर्शन था उसको दोहराएंगे. योगेश्वर, ये जो है ना, हमने एक्सपेक्ट किया था मीराबाई चानू से बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर और उसने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया. योगेश्वर, दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और मीराबाई चानू वैसे वर्ल्ड चैंपियन है, वैसी वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है और कॉमनवेल्थ में यहाँ पे भी गोल्ड जीत के उसने अपना जो प्रदर्शन था उसने अपने आप की उनकी जो बात थी वो कायम रखा है.
और ये बड़ी खुशी की बात है। उसने जो अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है ये बड़ी अच्छी बात है। और अब मेरा अगले साल एशियन गेम्स भी हैं, उसके बाद क्योंकि पेरिस ओलंपिक का ही बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है और मेरा पूरी उम्मीद है मुझे कि ये एक हौसला देगा अगले ओलंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मेरा भाई तानू को, और पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए काफी मदद मिलेगी इसको, इस मेडल से। और अगले साल एशियन गेम्स है, उसके लिए भी एक कोई खिलाड़ी जब मेडल जीतता है देश के लिए तो उसका काफी हौसला बढ़ता है। हाँ जी, हौसला बढ़ता है योगेश्वर। दैट यू वुड नो दैट यू आर अ ओलंपिक चैंपियन योरसेल्फ। Also, you know, Yogeshwar, अभी बहुत सारे other athletes हैं. We have other athletes also. PV Sindhu, we have PV Sindhu, Nikhat Zareen as well. We have a lot of expectation from there, Yogeshwar. आपको लगता है कि इंडिया जो लास्ट टाइम का टैली था 66 मेडल्स, अभी उसको भी क्रॉस कर जाएगा इस कॉमनवेल्थ गेम्स में? हमारे खिलाड़ी बहुत अभी बार नीरज चोपड़ा तो खैर इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, नहीं तो और ओलंपिक के मेडलिस्ट हमारे को अभी हैं। पीवी सिंधु आज उसने पाकिस्तानी की खिलाड़ी को हराया। लवलीना है। हाँ जी।